My dear friends, welcome to Sur Sangam Reflections from Jaipur. This week I am bringing before you a little story or a parable that Jesus told his disciples. What does he say in this? He tells about the workers being hired by the owner of a land. The owner possesses the land and he wants the workers to work in his vineyard. Therefore, he goes into the marketplace and there are people sitting there. He tells them, well, go to my field and work. I will give you 1,000 rupees. After about 2 hours, he goes once again and he finds some more people who have not worked. So he says, well, go and work in my vineyard. I'll give you just wages. After 2 or 3 hours, he goes once again. There are many more people there. He also employs them and says, go and work in my vineyard. In the last hour, just 1 hour is left before the end of the day. He sees some more people who are sitting there. And he says, are you ready to work? He says, well, they are ready. Go and work on my vineyard. When the day is over, he begins to pay them. He begins with the last person. And he gives those people who came at the end 1,000 bucks. The people are surprised because the people who came in the beginning feel they will receive at least threefold, maybe 3,000. But he gives only 1,000 bucks to those people who came in the beginning as well. Naturally, they begin to grumble at the owner, say, you have been unjust to us. We worked the whole day under the sun. And the last people who came, they hardly worked for an hour. And maybe there was not much sun. Why this? And then he tells them, look, I had promised you 1,000 rupees. And I am giving you that. I am not depriving of that. But the last ones, I wish to give more than that according to the way that I wish to give. Why? Because I am being generous to them. I am not being unjust to you at all. So please, do not grumble with me. My dear friends, at the outset, it looks that what the owner did was wrong because they should have been paid according to the work they did. But that is how God is. He is not just only just, but is also very generous. And therefore, sometimes we don't understand God's ways in our life. As Shakespeare tells us, that the whole world is the stage. We are just people who act on the stage and we go away. Nothing belongs to us. Everything that we receive in this world, including our life, including the education that we receive, our father and mother, and everything that we have is a gift of God. And therefore, God is never unjust. If we sometimes begin to think of the past life, and sometimes we feel God has been very unjust to me. Maybe I went for an interview and I did not pass. And therefore I missed the opportunity. Maybe I went for something else and again I was deprived of it. But when we look at our life after a long time, we feel how God has worked with us. That those things which we missed sometimes feel that they were good for us. And that's the reason we have really done very well now. Why this? Because God sees us in a different way. He loves us. He is a father. प्यारे भाई और बहनों, ये हमें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम केवल कैलकुलेट करके देखते हैं कि मुझे इतना मिलना चाहिए क्योंकि मैंने इतना दिया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की देन है, उसका एक गिफ्ट है। हम उसको डिजर्व नहीं करते और इसीलिए कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो डिजर्व नहीं करते उनको मिल जाता है, वो ईश्वर की इच्छा है। हमें उस पर ग्रम्बल नहीं करना चाहिए। और बहुत बार ईश्वर उनका हृदय देखता है और उनकी जरूरतों को देखता है और वह एक अनादिकाल से देखता हुआ आया है और इसीलिए वो अपने ही योजना के अनुसार चलाता है। हमारी योजना ईश्वर की योजना बिल्कुल नहीं है और इसीलिए हमेशा हमें धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब हमें भी मौका मिलता है
तो हमें भी ऐसे ही जनरस होना चाहिए, एक विशाल हृदय के होना चाहिए। मुझे याद है जब कोरोना के टाइम पर ऐसे लोग थे जो बहुत कुछ कमाते थे और उनको हम केवल कम देते थे उस समय, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। लेकिन ऐसे लोग थे जैसे स्वीपर वगैरह ऐसे थे, उनको हम पहले कम देते थे क्योंकि उनका काम ऐसा नहीं था। लेकिन हमें उन्हें पूर्ण तनख्वाह इसलिए देते थे कि उनकी जरूरत थी, उनके बाल बच्चे थे और जो पैसा अगर कट जाए वो जीवन यापन नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम उन्हें पूर्ण देते थे। लेकिन कभी कभी हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं जस्टिस यानी न्याय का मतलब है न्याय के अनुसार चलना है, लॉ के अनुसार चलना है। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, एक पास्टरल तरीके से हम लोगों को नहीं देखते हैं। कानून है, कानून का पालन करना है, और किसी की शादी होनी है, कुछ और कुछ होना है, हम गहराई से नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है, उस व्यक्ति को मैं कैसे मदद करूं, कैसे मैं उदारशील बनूं, कैसे उससे मैं प्यार से देखूं। ये जरूरी है, क्योंकि बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर परफेक्ट मीन्स दैट हमें भी उस प्रभु के समान बनना है जिसने सब लोगों को उदारशील बनकर ही व्यवहार किया है। चाहे वो लड़का वो छोड़ के चला गया था, वो कोई डिजर्व नहीं कर रहा था, फिर भी उसने अपने बच्चे को वापस ले लिया। वह पापिन स्त्री जिसे लोगों ने पकड़ा गया था, तब भी उस प्रभु ने क्या कहा कि उसको छोड़ दो, उसको एक और मौका दिया जाए। और उसी प्रकार समारी स्त्री, वो भी पापिन स्त्री, फिर भी प्रभु ने उस दृष्टिकोण से नहीं देखा। तो इसीलिए आज हमें थोड़ा मनन चिंतन करना पड़ेगा, हम लोगों को कैसे देखते हैं। डू वी लुक एट देम एज ओनली थिंग्स, पर्सन्स who deserve our love? How do we look at them? That is important. So my dear friends, let us all be just, but also let us be generous, compassionate. This is very important. You and me may need a reflection. Thank you and God bless you.